हाय एवरीवन। आज का लेक्चर मैं ह्यूमन सिक्योरिटी के टॉपिक पे लेकर आई हूँ। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ऑन दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू से कि थ्रू दिस चैनल आई प्रोवाइड रेडी टू लर्न नोट्स फॉर योर प्रिपरेशन बिकॉज इन दिस पेंडेमिक many of students no access to books, notes and classes. So to prevent their anxiety and stress, through this channel I provide you ready to learn notes so which help you to prepare for your exams. So let's get back to our topic. तो आज हम जानेंगे कि ह्यूमन सिक्योरिटी किसे कहते हैं। Human security has been defined as freedom from fear and freedom from want. Human development को अगर अचीव कर सकते हैं वो हम human security से कर सकते हैं, because जो aim है इस development में is to ensure कि people have the opportunity to live a long and healthy life, continually acquire knowledge and have access to resources so that they can have a decent standard of living. Human development work करता है toward expansion of opportunities. Then human security looks at ways of dealing with avoiding, mitigating and coping with threats. Human security में दो types के threats address किए गए हैं जिन्हें chronic embedded threats कहते हैं। इसमें वो threats आते हैं जो hunger, disease, violence against women face करते हैं, तो उसके towards human security prevent करता है। Sudden and painful changes, this is the second type of threat that is introduced in human security. इस sudden and painful changes वाले threats में वो threats आते हैं जो conflict से या natural disaster से या sudden economic downturn से face करता है human being. It is underpinned by the belief in basic rights for all. Human security के पीछे जो basic idea था वो UDHR से इंट्रोड्यूस किया गया। UDHR is the first landmark to make a human security in the corporation of constitution also. So article 3 of the UDHR says कि the right to security of person is a fundamental human right together with the right to life and liberty. So जो human society emphasizes the need to strengthen empowerment of the citizen. Achievement of human society requires a global political culture that is founded on shared values of human dignity and human rights. Human society means कि freedom हो हर उस threat से जिससे कि people के rights violate किए जाएं and their safety or even their lives. ऐसे ही democracy और democracy and good governance दोनों ही important हैं human security को promote करने में। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि नेशनल सिक्योरिटी हटाई जाए या नेशनल सिक्योरिटी के टुवर्ड्स एक ड्रॉबैक है। नो, ह्यूमन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव असर्ट कि जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है दैट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज अ मींस ऑफ इंश्योरिंग सिक्योरिटी फॉर इट्स पीपल, फॉर इट्स सिटीजन, फॉर इट्स कंट्री। So in this context, state security and human security are mutually supportive. Building an effective democratic state that value its own people और protect करा जाए minorities को, जो central strategy हो for promoting human security. There is a little doubt कि many of security threats like जैसे हम 21st century में face करे हैं कि poverty, underdevelopment, inequality, environmental degradation, these all are the threats the citizen face in their own country. These threats are not new. In an era of advancing globalization, they are increasingly transnational and interlinked in nature. These threats directly or deeply affect करते हैं safety or well-being of people and the system of state that comprise the contemporary international order may remain superficially stable. So international community therefore needs to rethink the concept of what security means and how best to realize it. Human security सबसे पहले जो define out की गई that was in 1994 when महबूब उल हक ने concept United Nations Development Program के द्वारा drew out किया गया in the Human Development Report.
इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, दैट इज कि the need for a profound transition in thinking from nuclear security to human security. So the concept of security has for too long been interpreted narrowly as security of territory from external aggression, or as protection of national interest in foreign policy, or as global security from the threat of a nuclear holocaust. So it has been related कि nation states then to people forgotten कि कैसे उन्हें अपने ordinary people को secure करना है in their daily lives. जो focus था that was totally on the nuclear security. But through this development report on human, it draws attention कि कैसे human security पे भी attention देनी है so that we can provide security to our ordinary people who in security provide in their daily lives. So report define human security based on two principal aspects. First की safety की जाए उनकी ऐसे chronic threat से जो hunger, disease and depression face करते हैं within the country, और second to protect from sudden and hurtful disruption in the patterns of daily life, whether in homes, in jobs or in communities. The report establishes the following essential characteristics कि human security universal concern है, ये people relevant to people है everywhere, both in rich countries and in poor countries. The degree of the threats may vary from one place to another, but they are real. Because जो threats हैं वो real होते हैं, but they vary from place to place. जो components of human security का है वो interdependent है. When the security of people is endangered anywhere in the world, all nations are likely to get involved. Human security is easier to ensure through early prevention than late intervention. बेटर है कि पहले ही ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा ह्यूमन के जो राइट्स हैं, जो बेसिक उनकी नीड्स हैं, उनको सिक्योर किया जाए देन लेट इंटरवीन. ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो पीपल सेंटर्ड है. इट इज़ कंसर्न कि कैसे पीपल को रहना है, कैसे उन्हें सांस लेना है, कैसे उन्हें फ्रीली एक्सरसाइज करने अपने चॉइसेस, एंड हाउ मच एक्सेस दे हैव टू मार्केट एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज, एंड वेदर दे लिव इन कॉन्फ्लिक्ट और इन पीस. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो थ्रेट्स हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के वो ऐसे क्लासिफाई किए गए कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि पॉवर्टी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जो इंडिया में फेस की जाती है, बिकॉज जो अंडर डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पॉवर्टी इज द मेजर एलिमेंट for such kind of problems. So with the introduction of economic liberalization, it has been expected कि जो impending economic problems हैं वो resolved हो जाएंगी. India's liberalization policy and its consequent measures have left the nation in further widening the gap between the rich and the poor. So economic disparities or discrimination have led to the spread of left-wing radical ideology and subsequently to violence. These have assumed unlimited proportions and the state failed to control this menace. So इस खतरे को कंट्रोल करने में इंडिया फेल हुई, because rich get richer and the poor become more destitute. So the root cause of this violence is basically economic in nature and is likely to further increase in frequency and range. So economic empowerment is a major factor that contributes to economic security. Economic empowerment किया जाए so to avoid such kind of issues. Food security. It is one of the most crucial aspects कि human survival के लिए food होना चाहिए. But जिस तरह deprivation of foods है उसकी वजह से starvation, ill health face करना पड़ता है, and the provision of food constitute an important element of human development and the deprivation of the same means a stunt human growth. So जो deny किए जाए ऐसे concept को तो it is a meaningless development because food is a basic necessity for human survival. क्योंकि food security is of great importance in a society. Another is health security. ये एक important component है human development और survival के लिए. अगर health ही लोगों की अच्छी नहीं होगी, citizens की अच्छी नहीं होगी, तो how well they can participate or how they well can they do their economic. So society is taken care of. In India, there are primary health centers in most of village.
they are least equipped to tackle even minor health problems. So ये सब चीजें भी फेस की गई हैं इंडिया में. जो पब्लिक एक्सेस है हेल्थ इन मेनी प्लेसेस इज रादर डिसमल, और जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी ही है कि दे आर सो अनहाइजीनिक कंडीशन कैन नॉट अफोर्ड एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज. सो द प्राइवेट सेक्टर इज मोर कमर्शियल in nature and does not like to help needs of the poor, not able to get the kind of health security. They are just away from such kind of security which cause human development पे impact करता है ये. Environmental security, it has been gaining की जो importance है of environment is like very evident. जिस तरह degradation हो रहा है environment में, climate change, depletion of ozone layer and massive industrial pollution, there has been an increasing awareness regarding the impact of development policies on the natural environment. Environmental security में ये secure किया जाता है. Personal and community security, it is widely accepted कि by one and all that human security and its prime goal is the protection of the individual. हर citizen का प्रोटेक्ट किया जाए और हर सिटीजन को हर वायलेंस से, कम्युनिटी को भी, पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन को भी हर उन वायलेंस से, हर उन अटैक से, हर उन थ्रेट से प्रोटेक्ट किया जाए. दैट इम्पैक्ट ऑन देयर ह्यूमन सिक्योरिटी. पॉलिटिकल सिक्योरिटी, द स्टेट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग की सिक्योरिटी और मेकिंग श्योर कि कैसे हमें वेल इक्विप करना है ऐसी काइंड ऑफ सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए. जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी शक ये है कि ह्यूमन सिक्योरिटी as the inequality tend to take a downward turn due to enhanced development levels and the availability of basic needs. Basic needs होनी चाहिए, availability होनी चाहिए to ensure कि human security हो और human development पे impact positively किया जाए. जो availability है security factor that prevents crime rates from soaring as it create more crimes. It is therefore necessary जो policy makers हैं that they should keep in mind those measures that ensure welfare of all. So जो कमीशन है ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी, दे स्टेटेड कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसमें सिक्योर करने हैं ऑल वाइटल कोर ऑफ ऑल ह्यूमन लाइफ्स इस तरीके से जिससे कि इन्हांस हो सके ह्यूमन फ्रीडम्स में और ह्यूमन फुलफिलमेंट में. ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है कि प्रोटेक्ट किया जाए उनके फंडामेंटल फ्रीडम्स को और फ्रीडम्स जो उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं. It means protecting people from critical and pervasive threats and situations. Human security में 3 तरीके के freedoms पे बात की गई है कि freedom from fear that refers to protecting individuals from threats directed at their security and physical integrity, कि हर individual को protect किया जाए उस threat से जिससे कि उनकी physical integrity और security के against हो. Freedom from want refers to the protection of individuals so that they might satisfy their basic needs. उनके basic needs fulfill हो जैसे कि उनको economic, social और environment aspects of life and livelihoods achieve कर सके. Freedom from indignity refers to the promotion of an improved quality of life कि they should be have a right to have a quality of life and enhancement of human welfare that permits people to make choices and seek opportunities that empower them. Human security में 2 strategies follow out की जाती हैं, that is protection and empowerment. Protection में protect किया जाए human को towards everything like food security हो, human health, all those security which I discussed just now. और empowerment is the strategy जिसमें हम enable करें people को कि वो अपने आप को develop कर सकें जिससे कि difficult situation में they able to help themselves. And empowerment not only enables people to develop their full potential but also permits them to participate in the design and implementation of solution to ensure human security for themselves and others. Human security में का जो principle है that is कि people centered है क्योंकि it works and it plays for the human only and human survival, livelihood and dignity. Multi-sectoral है because human security is based on a multi-sectoral understanding of insecurities जिसके अंदर ये सारे possible causes that is related to economic, food, health, environment, personal, community and political security के against work out करे. Human security faces the interconnectedness of threats and responses to them in 2 ways. First, कि ये interlinked to in a domino effect in the sense that each threat feeds on the other.
For example, violent conflicts can lead to deprivation and poverty, which in turn could lead to resource depletion, infectious disease, education. These all are to be happen if this thing to be get place. Second threat in a given country or area can spread into a wider region and have negative externalities for regional or international security. So through these like by the human security के threat से बचने के लिए these type of security is provided under the human security, जिससे कि वो economic security के द्वारा poverty और unemployment से बच सकें, food security के द्वारा hunger और famine से बच सकें, health security के द्वारा deadly infection disease जो face कर रहे हैं, unsafe and malnutrition and corona is also a part of in this kind of threat. तो health security provide की जाए citizen को, जिससे कि वो इन सब चीज़ों से बच सके. environmental security की एक जिस तरह degradation, resource depletion हो रहा है and natural disaster हो रहा है उससे बच सके. personal security, community security जो ethnic, religious और other identity based tensions है उनसे बच सके. पॉलिटिकल सिक्योरिटी में पॉलिटिकल डिप्रेशन और ह्यूमन राइट अब्यूजेस के टूवर्ड्स वर्कआउट होता है. तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट नोट दैट आई मेड कि किस टाइप की सिक्योरिटी किस थ्रेट के लिए वर्कआउट करती है. कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन सिक्योरिटी इम्प्लाइज अ कॉम्प्रिहेंसिव फोकस जो फेस करता है कोऑपरेटिव एंड मल्टी सेक्टर रिस्पॉन्सेस दैट ब्रिंग टुगेदर एजेंडाज ऑन सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स. ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है क्योंकि ह्यूमन सिक्योरिटी एक्नॉलेज करता है इनसिक्योरिटीज and contextualized solution that appropriately respond to each particular situation. Preventive oriented है क्योंकि prevention provide की जाता है as it is a prevention oriented. In this it reaching the risk and root causes जो insecurities को develop कर रहा है, और human security is aimed at prevention and introducing strategies of protection and empowerment. This is a short diagram, a very brief diagram I try to make to explain you कि कैसे human security में these are the strategies and these are the principles. freedom from fear करे human security से, freedom from want and freedom from indignity जो strategies होती हैं उसकी कि वो empowerment और protection provide करे. जो principles हैं दैट इज कि ये ह्यूमन सेंटर्ड है, मल्टी सेक्टरल है क्योंकि इसमें सारी सिक्योरिटी को एश्योर करा जाता है, और कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है और प्रिवेंशन ओरिएंटेड है. Why human security and development? It is the basic of inclusive human right, और जो tool for action is used in times of scarce financial resources और identify करे कि क्या priority actions is needed for the development. Human security benefit करते हैं उन लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा face करते हैं और exposed to threats, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक शर्त है कि ये ह्यूमन सिक्योरिटी होना चाहिए, सिंस देयर कैन बी नो डेवलपमेंट विदाउट ह्यूमन सिक्योरिटी. इट इज अ प्रायोरिटी वैल्यू फॉर मनी. टैकलिंग ह्यूमन सिक्योरिटी इज नॉट ऑलवेज एक्सपेंसिव, मोरओवर इट इज इफेक्टिव. सो थ्रू दिस notes and through this diagram and make all the things easy to you all कि आप ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से जान सकें. मैं आप अपनी कमिंग वीडियो पॉलिटिकल साइंस लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं एक नया सीरीज इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ. दैट विल डेफिनेटली हेल्प आउट फॉर द BA ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स. सो काइंडली stay tuned with this channel. Thank you so much for watching this video.